We're here. Assalamu alaikum, everyone. A very warm welcome to all our esteemed speakers, respected alumni, students, and distinguished guests joining us from across the world. I'm Muhammad Basi, a proud elite, and I'm truly honored to be a moderator for this special webinar organized by AMUOBA Lucknow as we celebrate our Golden Jubilee year. I'd like to invite Abdullah. आप आगाज करेंगे कलाम पाक से. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम. This verse is from Surah Ar-Ra'd. It means, indeed, Allah will not change the condition of a person until they change what is in themselves. This verse contains a powerful principle of social and personal transformation. Change starts from within. Allah will not bring about a change in the nation's circumstances, whether improvement or decline, unless the people themselves just change their mindset, values, and behavior. Thank you. Thank you, Abdullah. That was beautiful. So 2025 marks a milestone, 50 years of AMUOBA Lucknow's journey. Over these 5 decades, this association hasn't just brought alumni together, but it's extended Sir Syed Ahmad Khan's vision far beyond the gates of Aligarh Muslim University. What began with annual dinners and reunions has grown into meaningful work in education, social welfare, and community development, proving that the AMU spirit lives on wherever our alumni go. So our theme tonight is Sir Syed's legacy, AMU alumni's contributions to social change. This reminds us exactly why we are all here today. Sir Syed's dream wasn't only about building an institution. It was about nurturing generations who carry forward this torch of knowledge, this torch of progress and community leadership. From public service and academia to grassroots efforts that touch countless lives, our alumni stand at the forefront of social change. We are privileged to have an outstanding panel with us tonight. Lieutenant General Zamiruddin Shah, what an honor to have you. A distinguished senior general, former deputy chief of the Army Staff, and former vice chancellor of AMU, whose leadership continues to inspire generations. Mr. Ahmed Edresy, national head of the Association of Muslim Professionals, dedicated to building opportunities and professional networks for youth across India. Dr. Farah Usmani, an international health, gender, and development expert with over 25 years at the United Nations. She is the founder of Rising Beyond the Ceiling and the global VP of amazing collectives like Suffer Foundation and RBTC, and she's been doing some tremendous work across the globe. She'll be joining us from New York. Professor Riaz Mehdi, Dean Faculty of Allied Health Sciences, ERA University. It's a name synonymous with the continued academic excellence and visionary leadership. Engineer Arun Kumar Mathur, Senior Vice President of the Lucknow Management Association, a respected voice in our city's development circles. And Mr. Azfar Ali Khan, joining us from Qatar, founder of Aligarh Renaissance, recognized as a humanitarian awardee by the United Nations.
Each speaker brings a perspective that shows how our alumni continue to create ripples of positive change. I hope tonight's conversation not only celebrates our collective achievements but sparks new ideas, collaboration, and a renewed sense of purpose. I encourage all of you who have joined us to stay engaged, stay connected, share your thoughts, and take these insights back to your own communities. For those who have joined us now, I welcome you all again. Thank you once again for being here. With that, let's begin this evening's discussion. It's my privilege to first invite the president of AMUOBA, Syed Shoaib Sahab, to welcome you all. बहुत शुक्रिया माहम। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एमयू वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन की जानिब से एसोसिएशन की गोल्डन जुबली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहने को तो एसोसिएशन की इब्तिदा सन 1975 से हुई, मगर हकीकत ये है कि इस एसोसिएशन का वजूद 1972 में भी था, जब एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1972 उसी साल 17 जून को लागू किया गया और जिसकी मुखालिफत में एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था, जिसको लीड डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी कर रहे थे। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के क़यादत में एजिटेशन हुआ और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, और उस वक्त उस तहरीक में जिन ओल्ड बॉयज़ ने जद्दोजहद की और ख़ास तौर से शरीक रहे एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के ही बैनर पे, उनमें हाजी शफीकुर रहमान एडवोकेट, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी एडवोकेट, मसूद हसन एडवोकेट, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, शाहिद हुसैन खान मलियाबादी, और एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो नाम मुझे याद थे वो आज मैंने बताया। ये लोग सब शामिल थे और बहुत डेडिकेटेड अलीग्स थे। और उस तहरीक की अहमियत ये थी कि उसमें जो अलीगढ़ के उस वक्त के जो तलबा थे या बहुत जो नौजवान वहां से पढ़ के निकले थे, जिसमें हमारे लिंक में लॉग इन कर रहा हूँ। राइट जी, आप आ गए हैं जमीर साहब। आप जी, जमीर साहब ज्वाइन कर लिए। जी जी जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वी हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रोग्राम। सॉरी, आई हैड अ प्रॉब्लम ऑफ आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 10 मिनट्स। नहीं, कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सही वक्त पे तशरीफ लाएं। जी, तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि उस वक्त के जो नौजवान तलबा थे अलीगढ़ के और कुछ नए फारिगीन थे, जिसमें मोहम्मद अदीब साहब शामिल हैं, एक ज़फरुद्दीन खान फैज़ान एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो थे, आज़म खान साहब थे, ज़फ़र याब जिलानी साहब मरहूम वो भी थे उसमें। और इस तहरीक की मैं चूंकि ये जिक्र निकला है तो इसके बारे में एक दिलचस्प बात आपको और बताऊं कि इस एजिटेशन से उस वक्त के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, जो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हुए, वो भी उसमें हिस्सेदार थे। बनारसी दास एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे जो बाद में यूपी के सीएम हुए, वो भी उसमें शामिल थे। एक सोशलिस्ट लीडर राजनारायण हुआ करते थे, वो भी उसमें शामिल थे। उसके अलावा छेदी लाल साथी थे, पंडित सीताराम द्विवेदी थे। ये लोग सब बहुत ही ज़बरदस्त तरह से उस तहरीक में वाबस्ता थे। चूँकि उसका जिक्र निकला इसलिए मैंने उसके बारे में कहा कि मैं अर्ज भी कर दूं, कुछ बता भी दूं। 1975 में जब बाज़ाब्ता इस एसोसिएशन का आगाज हुआ तो मकबूल इलाही साहब इसके सदर मुंतखब हुए, और उसके बाद से एसोसिएशन का कारवां रवां दवा है, जिसका सेहरा बाद में आने वाले बेलौस और हमदर्द अली हजरात के सर जाता है, जिसमें हमारे अगर उसका नाम दिया जाए तो हमारे पीरजादा साहब मरहूम बहुत ही एक्टिव अलीग थे, और हमारे हर प्रोग्राम में सर सैयद डे का जो प्रोग्राम होता था उसमें आगे आगे रहते थे, बगैर उनके प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। इंजीनियर वकील अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर हफीज़ अहमद खान, और जैसा मैंने अर्ज किया कि ये वो हजरात हैं कि जिनके बगैर एसोसिएशन का तसव्वुर जो है वो अधूरा ही रहेगा। हमारी एसोसिएशन की एक खास बात यह भी है कि इसको हमेशा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सीनियर अलीग हजरात की सरपरस्ती हासिल रही है, और मौजूदा दौर में हमारे
इंजीनियर अरुण कुमार माथुर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, डॉक्टर सोहेल अहमद फारूकी वो भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। और ये दोनों शख्सियात जो हैं वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। ये वो दो शख्सियात हैं इस तरह की कि हमारी अगर ये 50 साल की का जो ये दौर गुजरा है, इस 50 साल में से कम 30 साल से ये लोग जो हैं एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि इतने अरसे तक जुड़े रहना और मुस्तकिल सरपरस्ती करना, ये हम सबकी बड़ी खुशकिस्मती है। ख़वातीनो हजरात, अमूबा लखनऊ ने जैसा कि अभी माहम ने भी कहा कि अपने को महज सर सैयद डिनर तक महदूद नहीं रखा। वो कि हर साल सर सैयद डे के मौके पर हम लोग एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम और उसके साथ जो ट्रेडिशनल डिनर है उसका इनेकाद होता है, और जिसमें लखनऊ में मुकीम अलीग बिरादरी बड़े जोश खरोश के साथ उसमें शरीक होती है, और जो नॉन अलीग बिरादरी है वो भी बहुत उसको बड़ा इंतज़ाज़ रहता है और वो भी इसमें हमें ज्वाइन करती है। अमूबा लखनऊ की एक बड़ी कोशिश ये रही है शुरू से ही कि सर सैयद की जो तहरीक थी उसको कायम रखा जाए, और उसी के तहत एक सिलाई स्कूल यहाँ पर चल रहा है। एक ज़माने से कम मैं समझता हूँ 25 साल से तालीमगाह निस्वा में, जिसका सेहरा हमारी उस वक्त की एसोसिएशन के जो भी सरबराहान थे उनको तो जाता ही जाता है। उस वक्त जो कॉलेज के प्रिंसिपल थी तबस्सुम के दुआई, उनके ज़रिए उसको कायम किया गया और आज भी वो चल रहा है। ज़कात फंड का कलेक्शन हर साल हमारे यहाँ होता है, और उस कलेक्शन से अलीग और नॉन अलीग लोग जो हैं वो उनके ताउन से जो रकम मौसूल होती है उससे हम लोग न सिर्फ जो है गरीब व नादार तलबा व तालिबात की माली इमदाद करते हैं, बल्कि गरीबों के इलाज व मुआवजे के लिए भी कुछ रकम उसमें मख्तस रहती है। और वो हम जो यहाँ के जो लीडिंग डॉक्टर्स हैं, ख़ासकर जो अलीग हैं, वो उनको हम वो दे देते हैं, और वो खुद अपनी तरफ से भी बहुत मदद करते हैं उसमें। जैसे डॉक्टर मुबशिर हैं और हमारे डॉक्टर मिर्ज़ा असलम बेग साहब हैं, वो तो हर साल इस पे अमूबा लखनऊ के प्लेटफॉर्म पर फ्री कैटरैक्ट सर्जरीज करते हैं। ये तो उस तरह के और भी बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। ये हम बहुत ही इस मामले में खुशकिस्मत साबित हुए हैं। ज़बान और अदब की जहाँ तक बात की जाए कि उसको फ़रोग देने के लिए भी अमूबा 7-8 साल से एक कारवान अदब मुहिम के तहत अरबी सरगर्मियों में मुलविस है, और उसके कन्वीनर हमारे जिस वक्त उसकी इब्तिदा हुई थी तो अहमद इरफान अली साहब मरहूम हो गए हैं, वो थे, और आज अनवर हबीब अलवी साहब उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में हमने मेडिकल कैंप्स भी मुनक़िद किए ताकि कमज़ोर तबक़ात को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा सकें। और रमज़ान के मौके पर राशन व इफ्तार किट्स की तकसीम हमारा एक अहम काम है, और हमारी जो सेक्रेटरी साहिबा हैं वो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, और शायद ही कोई हफ्ता ऐसा होता होगा कि जिसमें ये काम ना होता हो, और ये काम बगैर किसी कोताही के गुज़श्ता कई साल से जारी है। और हकीकत यह है कि ये सारे काम अलीग बिरादरी के ताउन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। लेकिन एक कमी जो बहुत अरसे दराज से हम लोगों को खटक रही थी वो थी ऐवान सर सैयद व सर सैयद मिशन स्कूल का ख्वाब, जो हमारे सीनियर्स ने देखा लेकिन कई वजूहात की बिना पर पूरा ना हो सका। हमारा ये गोल्डन जुबली ईयर बहुत खुशकिस्मत साल है, और हमारी पूरी टीम भी इंतहाई खुशकिस्मत है कि हमारे सीनियर्स का यह दायना ख्वाब भी पूरा होने की तरफ गामजन है। और ये काम तभी मुमकिन हो सका जब एक सीनियर अलीग और बहुत ही इंतहाई मुखय्यर इंसान डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर, जो लखनऊ के एक मुमताज़ सर्जन हैं, उन्होंने और उनकी अहलिया डॉक्टर उस्मा ने लखनऊ हरदोई रोड पर काकुरी और मलियाबाद के दरमियान एक बेशकीमती ज़मीन है उनकी, और वो उन्होंने इस कार्य खैर के लिए गिफ्ट कर दी अमूबा को, और एक हम लोगों ने अमूबा के तहत एक ट्रस्ट भी कायम किया है, और वो सर सैयद के नाम पर वो ट्रस्ट है, और वही इस ट्रस्ट को सर सैयद फाउंडेशन लखनऊ के नाम से, और वो ट्रस्ट जो है उसने सर सैयद मिशन स्कूल का काम शुरू कर दिया है। लेकिन मंजिल अभी दूर है, जो कि हमारे जो अलीग बिरादरी है
उसके ताउन के बगैर ये मंजिल हम लोगों को इतनी आसानी से मिल नहीं सकेगी। इस साल हमारे बहुत ही मुखलिस शख्सियत फरवरी में जनाब लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब तशरीफ़ लाए थे और हमारी जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया था, और इस मौके पर एक वीडियो तैयार किया गया था जो कि हमारी मॉडरेटर आज की हम अभी आपके सामने पेश भी करेंगी। 3 मिनट का वीडियो है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग जहाँ से भी ज्वाइन कर रहे हैं बैठे बैठे उस जगह का जायजा ले सकते हैं। मैं तमाम स्पीकर्स का आज के इस वेबिनार में इस्तकबाल करता हूँ। ये एक बेहतरीन पैनल है जिसमें सीनियर अलीग हमारे माथुर साहब मौजूद हैं, रियाज भाई मौजूद हैं, फराह मैडम तो शामिल ही हैं, वहीं नौजवान अलीग अजफर अली खान और हमारी मॉडरेटर माहम अब्बासी भी शामिल हैं। इसमें आमिर इदरीसी साहब भी शामिल हैं जिन्होंने अलीगढ़ से बाज़ाब्ता तालीम तो हासिल नहीं की, मगर सर सैयद के नक्श कदम पर चलते हुए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट पर काम करने के लिए एक नॉन सेक्टेरियन, नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल तंजीम यानी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की बुनियाद रखी, जिसकी शाखें सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी पाई जाती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब के बारे में कुछ कहना गोया आफ्ताब को चिराग दिखाना है। उनका नाम ही उनकी शख्सियत को उजागर करने के लिए काफ़ी है। मैं आप सबका एक बार फिर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, जहाँ हमें इतनी खुशियाँ इस साल मिली, वहीं हमारा जो गोल्डन जुबली ईयर है उसकी शुरुआत एक सानिहे से हुई, और वो ये कि हमारे एक बहुत ही मुखलिस और बेलौस साथी जो हमारे एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी थे, इंजीनियर माधव सक्सेना, इस माह जनवरी में अचानक इस दुनिया से रुखसत। और माधव भाई का गम अभी कुछ कम नहीं हुआ था कि अप्रैल माह के आखिर में एसोसिएशन के नायब सदर और हमारा जो सर सैयद फाउंडेशन है उसके ट्रस्टी इंजीनियर मोहम्मद गुफरान भी मुख्तसर अलालत के बाद हम सबको छोड़कर चले गए। मैं एसोसिएशन की जानिब से इन दोनों हजरात को खराज अकीदत पेश करता हूँ इस शेर के साथ कि मैं बाद मर्ग भी बज़्म वफा में जिंदा हूँ, तलाश कर मेरी महफिल मेरा मज़ार न पूछ। माधव भाई और गुफरान भाई अमूबा की बज़्म में हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज की गुफ्तगू इंतहाई कारआमद साबित होगी और हमको यकीनी तौर पर कुछ न कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। बक़ौल अल्लामा इक़बाल, ज़िंदगी दर जुस्तजू पोशीदा अस्त, अस्ल ओ दर आरजू पोशीदा अस्त। ज़िंदगी तलाश जुस्तजू में पोशीदा है, उसकी हकीकत आरजू में छुपी हुई है। यानी लाइफ इज़ लेटेंट in seeking, its origin is hidden in desire. बहुत शुक्रिया। Over to you, Ma. Thank you so much for those thought-provoking insights. And I will quickly like to share the video now. AMU ओल्ड बॉयज लखनऊ के कोऑपरेशन और की जो टीम स्पिरिट है, मुझे पूरा यकीन है कि ये इदारा जो है जरूर बनेगा
और मैं कहना चाहता हूं कि सब अलीज को ये मॉडल जो है रिपीट करना चाहिए. दे मस्ट रेप्लिकेट दिस मॉडल ताकि जिस इलाके में वो हों सर सैयद के नाम पे स्कूल कायम करें और अपना जो है यानी जो डेट है आपका टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो आप रीपे कर सकें बाय एस्टैब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूशन इन सर सैयद्स नेम. तो ये स्कूल इंशाल्लाह जरूर जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा और इसमें जो है बच्चों की तालीमी फाउंडेशन वो है मजबूत होगी और वो जिंदगी में कामयाब रहेंगे. तो मेरी अपील सब अलीग से है कि यही मॉडल आप इख्तियार कीजिए. सबसे ये अपील है कि इस प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट करें. हम चाहते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ क्लाउड फंडिंग हो, चाहे जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करिए और आप जो है एक डेट पूरा आप जो है आपके ऊपर अगर आप इस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करेंगे जरूर करिएगा और जल्द से जल्द ये स्कूल कायम हो जाना चाहिए. Thank you for your patience, everyone. I think technical glitches have become a part of all the webinars. It's a mandate. But Zamiruddin Shah sir, I welcome you, and you had some very powerful words to say. So I really wanted the video to play. And moving on, we begin tonight with a powerhouse, someone whose work spans continents, but whose heart remains close to home. And throughout the webinar, if I'm not audible, please feel free to drop a message to me on the chat and I'll look into it. So I'd love to welcome now Dr. Farah Usmani, who brings over 25 years of experience working for women and girls across the world. From national health systems to global policy tables, she's held leadership roles in the public sector with international donors and has been a part of the United Nations for more than 2 decades now. So she's currently based in New York. She's the first Muslim woman in India and the first woman from Uttar Pradesh who has served at the director level within the UN's International Civil Service. She holds advanced degrees in health policy and obstetrics and has worked across 50 countries and still continues to give back to her home state through powerful initiatives and work focused on women's empowerment and reproductive rights. Dr. Farah had to urgently travel, and so she has just sent me her recording, and that's really sweet of her that we will play for you now. We are honored to have her remarks with us. Please join me in welcoming Dr. Farah Usmani. I will quickly play her video for you all. Shall Appa give me a thumbs up if the sound is fine? President Syed Shoaib, distinguished panelists, AMU alumni, friends, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and good evening. Greetings from New York City. It is indeed my pleasure and privilege to join you today at this session to mark the Golden Jubilee of the AMU Alumni Association of Lucknow and to celebrate Ye Mera Chaman, an inspirational tarana which brings very fond memories for me. I recall my 10-year or so time capsule at AMU Jawaharlal Nehru Medical College, where I completed my medical studies, worked as a resident and lecturer, and was also awarded my first fellowship abroad to UK by the British Council. And all this started in July 1978, way back 4 decades ago, when I had the privilege
to be the first woman to top the AMU All India Medical Entrance Examination. It takes a village, they say, of family, friends, peers, teachers, mentors who teach you and challenge you and help raise the bar in a myriad ways. I like to take this opportunity to convey my deep gratitude to my JNMC AMU community. Dear friends, as a young medical student, I was introduced to Sir Syed's contribution towards the advancement of higher education, which was not only monumental, but truly ahead of the times. Sir Syed Ahmad's worldview was forged in the terrible post-1857 period when, after brutally crushing off the first Indian uprising of freedom, the British were busy settling scores. The British held the Muslim community primarily responsible for the uprising of 1857 and therefore exacted terrible revenge. Bereft of all political power, with their lands and titles snatched away, the Muslims of India turned their back to the British and all they stood for: Western education, science and technology, modern outlook, and even reason. It was in this desolate period that Sir Syed Ahmad Khan provided a ray of hope to the Muslims of India. The literacy rate of 19th century India, where he lived, ranged from anywhere between 3 to 5%, and female literacy was estimated to be less than 1%. Sir Syed Ahmad imbibed his liberal worldview from the long tradition of scholarship. He had a progressive and nuanced approach towards women's education and empowerment, taking the 19th century socio-cultural context of India. According to scholars, Sir Syed sought to overthrow the notions that Islam could not permit women out of seclusion nor recognize the duty of women's education. The fact that Sir Syed was a great votary of women's rights is also evident from his scholarly legal work in the field of civil rights of women, contributing to the passing of the Civil Rights Act of 1866. All of us alumni, dear friends, in the room today have access to university education, which is a privilege that many women and girls across India and the globe do not have. As per the data available from the All India Survey on Higher Education, the gross enrollment rate for all female students in higher education in India was 27.3 in 2020, approximately only 1 in 4. The overall education status of Muslim women in India is worse as compared to Muslim men and women of other communities generally. They also have challenges with the lowest work participation and a high dropout rate. The stereotypical image of minority women as backward and lacking ambition is neither true nor fair. It obscures the complex realities of life of the 100 million Indian Muslim women. There is also incorrect attribution to the low levels of educational attainment to a lack of desire as well as the strictures of Islam rather than to the broad range of socio-economic and policy roadblocks. Let me now turn to the role of women alumni and paying it forward. Of the total approximately 38,000 students in AMU today, the Women's College has an enrollment of 3,236 female students. Also, a significant number of female students enroll across the 300 courses, including undergraduate, postgraduate, and doctoral programs. AMU women alumni are making their mark in various states in India and globally across countries in different sectors and professions, as we have seen from our Rising Beyond the Ceiling initiative. Some impactful areas of alumni contribution include education and public services. Former students have established schools, colleges, and community learning centers across India, particularly in underserved and minority communities. Many are engaged in NGOs and literacy movements, ensuring education remains a tool of inclusion rather than privilege. From bureaucrats and diplomats to judges and elected representatives, our leagues have consistently advocated for equity and social justice, and their efforts in policy making and administration often focus on uplifting marginalized communities and promoting inclusive development. Distinguished alumni friends, we cannot win if half the team is not in the game.
As the world struggles with growing inequalities and increasing political polarization, there is even a greater urgency to reinvent, reimagine, and reset the education and empowerment of women and girls, and to invest in the 50% to secure financial independence. Sir Syed's profound legacy contains the inspiration we need today. When I think about the driving force behind Sir Syed's spirit, resilience in the face of criticism, and sharp focus for change, I would have to sum it up by simply saying it is the courage of conviction. This is also well captured in Sir Syed's quote, "I lost my hair, my eyesight, and my vision, but not my vision, and my vision never dimmed." The vision of empowerment of women and financial independence must not be dimmed. We need more than ever Sir Syed's laborious efforts to meet the demand of challenging times and his courage of conviction today. This is a moment of transformation. Let us inspire hope. I thank the AMU Boys Association of Lucknow for their warm invitation to join this session, and I wish the association and all the alumni association increasingly forward steps towards philanthropy and service. Thank you. बहुत खूब. That was thought-provoking and wonderful. She's so passionate. It's always wonderful to hear her. And if you spend even 10 minutes with Farah ma'am, you would know this. So thank you, Farah ma'am, for reminding us why this work matters and why we as Aligarh Muslim University's alumni should be at the forefront of social change. We're coming from that background, and your global perspective and local commitment are both deeply inspiring. Up next, please welcome Azfar Ali Khan, joining us from Qatar, an alumnus of Aligarh Muslim University. He has completed his schooling and Bachelor of Engineering from AMU. He is the founder of Aligarh Renaissance and has been recognized as a humanitarian awardee by the United Nations organization. Asfar sir is also a dedicated social and RTI activist committed to driving positive changes in society. Please welcome him. Am I audible? Yes, you're audible, loud and clear. Thank you very much. Thank you. First of all, I would like to congratulate to all AMUOBA Lucknow members. Your dedication and efforts have truly made this milestone special. Wishing you continued success and unity in the journey ahead. So I will start my speech not just as a fellow Aligarhian, but as someone who deeply believes in the vision of Sir Syed Ahmad Khan. As Mehem already introduced me, my name is Azfar Ali Khan and I am a founder of Aligarh Renaissance. This organization was established in 2014 by a group of like-minded friends who want to carry forward the legacy of Sir Syed Ahmad Khan. On this special occasion, I would like to pay my humble tribute to our founder, Sir Syed Ali Rahma. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. By the grace of Almighty, Aligarh Renaissance have 8 international chapters and 800 members across 53 cities in India. Our mission is rooted in social reform and community empowerment. We firmly believe that Sir Syed Ahmad Khan's vision extended far beyond the education, and Sir Syed Ahmad Khan believed in the principle of liaquat, competency, and the iqtida, authority or power, as essential for the community progress. He emphasized to acquire knowledge, develop skills, and participate in the governance to gain the authority and influence. We often celebrate the glorious contribution of AMU alumni. Yes, we proudly celebrate the accomplishment of the AMU alumni across the globe.
We have many doctors, engineers, servants. Our list is very long. I would say ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ. But today, I stand here with a critical lens because administration without accountability leads to stagnation. The truth is track. Despite our huge alumni network, our collective social impact is not up to the mark. While individual success stories shine, our community as a whole continue to struggle with poverty, educational backwardness, and unemployment. I don't want to blame anyone this time. For this time is for the future course of action, because if not us, then who? If not now, then when? So I will give you some my recommendation to AMUOBA Lucknow. If we can work together, you already started the construction of the schools, but along with that, we can do one thing. We can create a community. Just a means the AMU Alumni Network must form the body in every city and country where they are present. This group can work on local issues, educational skills or development, legal aid, or health camps. We can create a mentor and career support for all the AMU students. We can adopt one school or village initiative. We can provide the education to underprivileged students, and we can provide the resources to create the model institution for change, like AMUOBA Lucknow is doing right now. And beyond the alumni network, I must to say that the dinner is not sufficient to celebrate Suicide Day. And since 2014, I never attended Suicide dinner. So if we want to work on Suicide mission, then we have to follow the Suicide dream. His dream to empower the community and upliftment of the society. Not through the education, also through the iqtidar and liaquat, means competency and empowerment. We have to grab the powers in our hand if we want to succeed in our society. And we have to work under one umbrella. Like we have many organizations throughout the world, but we have to work under one umbrella. All organizations should come and work together. Otherwise, we cannot achieve our target, and we cannot serve our community without without any unity. So I will conclude my speech with फैज़ अहमद फैज़ पोइट्री. ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार ये मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का चाहल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना का मिदल. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you, Mr. Asfar. Wonderful points raised there, and we will all connect, inshallah, and keep up the good, important work. This is why we call ourselves, a community, and I'm sure that we will continue to make ripples of positive change. And for all of you who have joined us and are here, thank you so much once again for tuning in. Now, taking this forward, I am delighted to introduce Mr. Ahmed Edresy, co-founder of the Association of Muslim Professionals, AMP, has spent 18 years building a powerful movement for education, employment, and empowerment of the marginalized communities. And under his leadership, AMP now spans 200 plus chapters and 5,000 plus NGO partners across India. His NGO Connect project unites grassroots efforts. So his NGO project is creating a lot of real change in more than 200 backward districts.
He is a visionary in every sense. He continues to inspire collaboration, empowerment, and long-term progress. We welcome you, sir. Over to you. थैंक यू महम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन. सबसे पहले तो मैं जनाब शोएब सैयद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हम सब लोगों को आज के इस अहम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेमिनार में बोलने का मौका दिया. मैं अमूबा लखनऊ को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि अमूबा लखनऊ ने अपने एग्जिस्टेंस के 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 50 साल तक कायम व दायम रखना एक बहुत बड़ा काम होता है और वो आप सब लोगों ने मुमकिन कर दिखाया है. इसलिए अमूबा के सारे मेंबरान जो है काबिल मुबारकबाद हैं अमूबा लखनऊ के. साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ कि जो पूरे मुल्क भर में मुझे ऐसे महसूस होता है कि शायद अमूबा लखनऊ सबसे ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है AMU के फारिगीन की और उस कैरेक्टर को आप सब लोगों ने हमेशा से मेंटेन किया है, उसके लिए बहुत मुबारकबाद. और साथ ही साथ जो एक स्कूल ओपन करने जा रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, I have been hearing continuously, I know each and everything about that school because I spent a lot of time with Shoaib bhai and my friends in Lucknow, so I know everything about that school. तो डॉक्टर साहब जिन्होंने जमीन डोनेट की और उसके बाद आप सभी लोग बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं. मुझे लगता है कि इसी तरह काम करने की जरूरत है और इसी तरह से बहुत सारे कॉन्क्रीट एक्टिविटीज की जरूरत है जो ना सिर्फ अमूबा लखनऊ बल्कि जितनी भी एलुमिनाई एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस पूरे मुल्क भर में फैली हुई हैं उन सबको इसी लाइन पर काम करना चाहिए. मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि एलिग होना या सर सैयद के मिशन को पसंद करना ये सिर्फ उन लोगों के लिए खास नहीं है जो जिन्होंने अलीगढ़ में तालीम हासिल की. ऐसे तमाम लोग जो इस मिशन से वाबस्ता हैं, जो इन तमाम चीजों को समझते हैं, जो जनाब सर सैयद की सोच को समझते हैं, उन तमाम लोगों को आप जो है अलीग बुला सकते हैं, अलीग बुलाना चाहिए ताकि हम जैसे लोगों को भी इस एक अजीम बिरादरी है उसमें शामिल होने का मौका मिले. साथियों, मैं समझता हूं कि अलीग होना, अलीगढ़ से तालीम हासिल करना ये एक ब्लेसिंग है हम सब जिन्होंने भी वहां से तालीम हासिल की है. अल्लाह ने हम सब लोगों को चुना और हमको ये मौका फराहम किया कि हम सब लोगों ने अलीगढ़ से तालीम हासिल की और उस लिहाज से हम लोगों को ये फिक्र होनी चाहिए कि जो मिशन जनाब सर सैयद ने शुरू किया था उस मिशन को हम कितना आगे ले जाते हैं, कितना पॉजिटिव रखते हैं, कितनी मजबूती के साथ चलाते हैं. वो उस पर काम करना वो हम लोगों का बहुत प्रायोरिटी एजेंडा होना चाहिए. आप अगर देखें तो दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर अलीग बिरादरी के लोग मौजूद नहीं है. आप हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का कोई शहर तो छोड़ दें आप, कोई देहात, कोई कस्बा, कोई विलेज, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जहां के लोगों का ताल्लुक अलीगढ़ से ना हो. तो इतना जबरदस्त नेटवर्क मौजूद रहने के बावजूद अगर हम उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत लम्हे फिक्रिया है. मतलब सोचना चाहिए हम सब लोगों को, ना सिर्फ अमूबा लखनऊ को बल्कि AMU से जुड़े हुए सभी लोगों को. अगर अल्लाह ने हम लोगों को ये मौका दिया है, हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अलीगढ़ तक पहुंचे, तालीम हासिल की और आज दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और ना सिर्फ फैले हुए हैं बल्कि बड़ी मजबूत पोजीशन में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है माशाल्लाह. अलीगढ़ से निकले हुए तमाम लोग दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन में बहुत सीनियर पोजीशंस पे काम करते हैं. दे आर डिसीजन मेकर्स, दे आर पावर हाउस, दे हैव इनफ रिसोर्सेज टू डू मेनी थिंग्स. लेकिन अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम लोगों को उस पर सोचना चाहिए. अगर अल्लाह हम लोगों को प्रिविलेज देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को जिम्मेदारी भी देता है. उस जिम्मेदारी को पूरा करना हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा फरीजा है. ना सिर्फ अखलाकी फरीजा, मैं तो यूं समझता हूं कि हम लोगों का मजहबी फरीजा भी है. और शायद हो सकता है कि अल्लाह पाक हश्र के मैदान में हम लोगों से इस बारे में सवाल पूछे कि हमने आपको ये मौके दिए थे, हमने आपको तालीम दी, तालीम हासिल करने के लिए मुल्क के सबसे नामवर इदारे में एक मौका फराहम किया, आपने उसकी बदले में क्या किया, आपने कम्युनिटी को रिटर्न में क्या दिया. ये सबसे अहम मकसद हर अलीगढ़ के तालीम याफ्ता इंसान के जहन में होना चाहिए. देखिए, जनाब सर सैयद ने, उनके साथियों ने, उस दौर के तमाम लोगों ने जो करना था वो कर गुजर चुके. उनके जमाने के हालात और तकाजे बहुत मुख्तलिफ थे. आज के जमाने के हालात और तकाजे मुख्तलिफ हैं. हम लोगों को आज के दौर के मुकाबले आज के दौर में ये सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं.
मैं बल्कि यूं कहूं कि जब सर सैयद ने ये काम शुरू किया था, अलीगढ़ में इंस्टीट्यूशन तामीर करने का जो काम शुरू किया था, तो मुख्तलिफ महाज पर उनके सामने परेशानियां थी, मुसीबतें थी। सरकार को ये समझाना था कि हम कोई सरकार मुखालिफ काम नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कम्युनिटी को भी ये समझाना था कि हम कम्युनिटी मुखालिफ भी नहीं है। ना सिर्फ सरकारी तौर पर मुखालिफत थी, बल्कि विद इन कम्युनिटी उनकी बहुत सारी मुखालिफतें थी। हम सब उन तमाम चीजों को जानते हैं। आज कम से कम हम लोग अगर कुछ काम करने की कोशिश करें तो विद इन द कम्युनिटी तो कोई मुखालिफत नहीं होगी, जो होगा सपोर्ट होगा इंशाल्लाह। जो जिस तरह से सपोर्ट कर पाएगा वो करेगा। तो कम से कम उस लिहाज से हम जो है कहीं ना कहीं उनसे बहुत बेहतर सिचुएशन में है, उनसे बहुत बेहतर हालात में है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के रिसोर्सेज भी काफी हैं, मुसलमानों की पोजीशंस भी बहुत अच्छी हैं, मुसलमान तालीम के मैदान में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में अगर अमूबा लखनऊ और जितनी एसोसिएशंस हैं वो लोग अगर सिर्फ छोटी छोटी एक्टिविटीज को करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी तब्दीली और लाई जा सकती है इंशाल्लाह। साथियों, मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि कम्युनिटी का हर फर्द, चाहे वो अलीग हो या ना हो, every single person in the community is very much sincere and dedicated towards the community। वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, मुखलिस है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है और कुछ ना कुछ करता है। बिगैर करे हुए कोई इंसान, एक इंसानी फितरत है कि इंसान जो है समाज में कुछ ना कुछ नफा पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक हम लोग ये कोशिशें इंडिविजुअल करते हैं, तो मैं समझता हूं उसके वो नताइज हासिल नहीं होते जो एक इज्तिमाई अमल में हासिल हों। जो कलेक्टिव एफर्ट से जो नताइज हासिल किए जा सकते हैं, वो इंडिविजुअल एफर्ट से हासिल नहीं किए जा सकते। इसलिए अलीग बिरादरी की और अमूबा जितनी एसोसिएशन है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बढ़ती है कि हम सब जब मिलकर कुछ काम करते हैं, जैसे कि एक मिसाल सामने है ये स्कूल की, जिसको शोएब भाई हमारे लीड कर रहे हैं, उस इनिशिएटिव को, AMU अमूबा लखनऊ की पूरे इनिशिएटिव को। मैं समझता हूँ इस तरह के इनिशिएटिव सभी लोगों को लेना चाहिए। सिर्फ मैं मुल्क भर में अगर आप देखें तो सैकड़ों जो है एल्यूमिनाई एसोसिएशन होंगी हर शहर में। अगर हर एसोसिएशन ये तय कर ले कि वो एक सिंगल इदारा बनाएगी, इदारे को भी अगर आप एक प्रॉपरली डिफाइन करें, तो एक सिंगल स्कूल बनाने की अगर कोशिश करें अपने अपने इलाकों में, तो मैं समझता हूँ कितने बड़े सी चेंज कैन कम विद दिस इनिशिएटिव। तो मैं समझता हूँ शोएब भाई, आप लोगों ने एक नई शुरुआत जो स्कूल बनाने की है, इंडिविजुअली तो बहुत सारे अलीगढ़ के लोगों ने स्कूल बनाई होगी, नो डाउट अबाउट इट, माशाल्लाह। आई नेवर ब्लेम अलीग बिरादरी फॉर दैट। लेकिन ये जो आपका स्कूल है, ये इसलिए खास है कि एसोसिएशन की तरफ से बनाया जा रहा है, माशाल्लाह। और जब एसोसिएशन की तरफ से बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी ओनरशिप आती है, बहुत सारे लोगों की शमूलियत आती है, और एक इज्तिमाई अमल के जरिए हम कम्युनिटी में एक अहम पैगाम देने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर, आज जो लोग इस सेशन में हैं, बाद में सुनेंगे, जिससे भी हमारा राब्ता हो, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इस तरह की जो है इदारे साजी में फोकस करेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करेंगे, गांव गांव तक इस तरह से अच्छे इदारे पहुंचाने और तामीर करने की कोशिश करेंगे। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय शाह साहब कि माशाल्लाह जब वो वाइस चांसलर थे, तब उन्होंने ये बात की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलीगढ़ का स्कूल होना चाहिए। किसी वजह से अगर वो कुछ सरकारी वजूहात की वजह से अगर वो काम नहीं हो पाया, तो क्या हम अपने आप में इतने सक्षम नहीं है क्या हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल खोल दें? डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए, हर ब्लॉक में एक स्कूल खोला जा सकता है। ना सिर्फ स्कूल खोला जा सकता है, बल्कि जितने इदारे, जैसे इंस्टीट्यूशंस, व्हाटएवर वी थिंक ऑफ, वी कैन डू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हम सब लोगों को इतना नवाजा है, माशाल्लाह। और ना सिर्फ ये इदारे, बल्कि आज के दौर के हिसाब से जो कुछ करने की जरूरत हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के डोमेन में काम करने की जरूरत हो, एंटरप्रेन्योरशिप के डोमेन में काम करने की जरूरत हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की जरूरत हो, इन तमाम चीजों में हम सब लोग मिलकर एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ चैलेंजेस होंगे, शायद अमूबा की एसोसिएशन से कुछ करना जरा मुश्किल हो, लेकिन हम लोगों को नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, नए सेटअप बनाने पड़ेंगे, जिसके जरिए हम इस तरह से काम कर सके। अमूबा जो एल्यूमिनाई एसोसिएशंस है, दे कैन प्ले अ रोल ऑफ एनेबलर्स। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, सदारत का वक्त कम मिलता है, ये तमाम मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें एनेबलर बन के छोटे छोटे अगर यूनिट्स बनाने की कोशिश करें हमारे ही साथियों को मिलाकर, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह कर सकते हैं। साथियों, AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेसर्स, आप सभी लोगों ने ये बातें सुनी होंगी, इस ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूं, मैं AMP और AMU और AMP में कोई फर्क नहीं समझता, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक U और P का फर्क है, माशाल्लाह। तो वो
ये जो कैरेक्टर है ना, ये दोनों, मतलब द काइंड ऑफ पीपल विच आर देयर विथ एएमयू, द काइंड ऑफ पीपल विच आर देयर विथ एएमपी इज एग्जैक्टली सिमिलर माशाल्लाह। वो एकदम सेम सोच के, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं। हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये एएमपी भी अलीग बिरादरी की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है कि उसका फाउंडर शायद अलीगढ़ से पढ़ा ना हो, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए तमाम लोग बशमूल शोएब भाई, वो अलीगढ़ से वाबस्ता है, अलीगढ़ की सोच से वाबस्ता है, सर सैयद के मिशन से वाबस्ता है और उसी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर शायद किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से अगर काम ना बनता हो तो एएमपी या इस जैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी है, मैं सिर्फ एएमपी की भी बात नहीं करता, उनसे वाबस्ता होकर हम इस मिशन को, मिशन जो जनाब सर सैयद का मिशन है, उसको लेकर आगे पहुंचे इंशाल्लाह। और अगर हम लोगों ने, आप ये समझिए ना, अलीग बिरादरी होना मतलब वी आर दी फाइनेस्ट पीपल ऑफ द कम्युनिटी। एक बेचारा जो ठेला लगाता है कहीं पर, छोटी मोटी दुकान चलाता है, कारोबार करता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं समझता हूँ जिम्मेदारी तो उसकी है जिसको अल्लाह ने जहन दिया है, अल्लाह ने जिसको तालीम से नवाजा है, उनकी जिम्मेदारी है। और हम लोग मिलकर इंशाल्लाह जिम्मेदारी पर काम करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस लाया जा सकता है। एएमपी इज ऑलवेज अवेलेबल। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि जितनी एलुमिनाई एसोसिएशंस हैं अलीगढ़ के लोगों की, उन सब से हमारा कहीं ना कहीं टाई अप हो, कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो, ताकि हम मिलकर काम कर सके। हम आपके जो मेंबर्स हैं माशाल्लाह, जो आपका एक जो एसोसिएशन है, उनके जो तमाम लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े, हम मिलकर काम करें, ज्वाइंटली काम करें इंशाल्लाह, तो कई सारी ऐसी चीजें की जा सकती है। हम लोग एक छोटा सा 2 लाइन में, दो चार जुमलों में बताना चाहता हूँ कि वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग अ 25-year एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक development roadmap for Muslim community, which we have decided to create awareness in all the parts of the country, especially all Muslim majority areas in the country, inshallah। उसमें हम लोगों को AMU से जुड़े हुए लोगों की बहुत मदद की जरूरत होगी। शोएब भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, और आपके जो तमाम साथी आज ये पैनल में यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि तमाम एलुमिनाई एसोसिएशन से हमको कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनके मेंबरान से कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं समझता हूँ AMU के इंसान हर गांव से आया हुआ है, कहीं ना कहीं AMU तक पहुंचा है, तो उस एक लिंकेज की वजह से हम जो है गांव गांव तक पहुंचने में हम लोगों को आसानी होगी। और एवरी सिंगल इंडिविजुअल उसको अपना रोल प्ले करना होगा, ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि कलेक्टिवली, क्योंकि रिजल्ट्स जो है कलेक्टिवली आते हैं। अल्लामा का एक शेर है जो AMU मिशन पे भी वाबस्ता होता है, उसी को कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हम इस बात को, इस शेर को भी समझें, मिशन सर सैयद को भी समझें, AMU एलुमिनाई एसोसिएशन की बुनियाद को भी समझें, उसकी तहरीक को भी समझें, और आइए हम सब अहद करें, आज 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं अमूबा लखनऊ को, ऐसी कोशिश करें कि जो कुछ 50 साल में नहीं हुआ शोएब भाई, वो अगले 5 साल में करके दिखाएं इंशाल्लाह। इस बात का अज़्म करें, हम सब लोग आपके इस मिशन में साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir. Your words and passion gives us so much to think about. I think we should all take a minute of silence and really let everything sink in, whatever you said. और आपने बहुत important बात कही है कि हमारी education का कोई फायदा नहीं है अगर हम खुद से आगे आके community के लिए कुछ ना करें। I am also a higher education counselor, sir, and I try my best to touch as many students' lives as possible. So thank you so much for this passion, for this energy, and we will all keep in touch and work to bring the positive change that we want to see in the society. Now, to share another perspective, I'd like to invite Professor Riaz Mehdi, sir, an esteemed alumnus of AMU who completed his BSc, MBBS, and MD before joining the Department of Pathology at JNMC. Sir has held several academic and administrative positions, including officiating provost and GC coordinator at AMU, an accomplished scholar in hematology and blood banking. He has authored multiple textbooks and his autobiography, The Circumstantial Doctor. So, he currently serves as the Dean Faculty of Allied Health Sciences at our university, and I request you all to join me in welcoming him. Thank you, Mahim, for such an exhaustive introduction. First of all, I would like to pay my regards to our ex-Vice Chancellor of AMU, Lieutenant General Jamiluddin Shah Saab, and our senior Arun Mathur Saab,
and then for all my co-panelists. And I would like to thank AMUOBA Lucknow, जिनके 50 साल पूरे हो गए हैं. They are going to golden jubilee year. Though so 50 years is the middle age, is said middle age. So they have got a deadly combination of experience and youthful energy. 50 साल में से उन्होंने एक्सपीरियंस तो गेन किया, लेकिन जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, दे वर्क लाइक टीनेजर्स. देव गॉट एनर्जी. तो मैं शोएब साहब, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बहुत मेहनत और बहुत जज्बे के साथ काम कर रहे हैं वो. अब मैं जो आज का सब्जेक्ट है, द मौजू, एक्चुअली इट वाज गिवन दैट लेगेसी ऑफ सर सैयद. तो you know, the alumni association has got a global presence, and in almost every city of everywhere in the world, in all the continents, you find Alligerians. So we should not confine ourselves vision to enhancing the knowledge of our students and propagating education in Indian perspective only, but let's expand our canvas. तो जो मैं बात आज करने जा रहा हूँ, with the context of the legacy of Sir Syed. You know, Sir Syed established Anglo-Oriental College in 1875, exactly 150 years back. And now, after 150 years, now we are talking about his legacy. So I will just pick up two things which he said. In 1883, Sir Syed said, he organized a conference, as he mentioned. His vision was promoted his vision of modern education and political unity of Muslims. So I will just pick up these two things. What? Promotion of modern education and political unity of Muslims. Have we achieved that? We cannot say that we have not done. We have done a lot. The Indians and the leagues are present everywhere, and there is no doubt the condition of the Muslims, which was in about 150 years, it is much, much better now. But you find Alligerians, and you find the percent of education among Muslims is much better. What was about 150 years back. But still we have to do a lot. Sir Edresy has just mentioned that. And that is the result of Aligarh movement only, that Mr. Edresy is here. And all the academies which are going on, whether it Bangalore, Shaheen Academy, or somebody is doing an excellent job in Calcutta, it is all because of the Aligarh movement, which was initiated by our founder, Sir Syed Ahmad Khan. And people are doing a lot. But I think still a lot has to be done. ये दोनों चीजें, whatever I just mentioned, I would correlate it with the present perspective and a global perspective. And don't think I'm going to be political, because politics is definitely something which affects your day-to-day life. It's not politics. If somebody is educated, that is also good politics. If somebody is not educated, that's a bad politics. If somebody is hungry, it's a bad politics. Somebody is getting bread, it's a good politics. So everything is covered by politics. So don't think it's politics. In the present scenario, we cannot ignore what is going on in Gaza. And I have to correlate it with this. What is happening in Gaza? It is a genocide massacre which is going on. And by whom? And why? What is the difference? We have to pick up some good things from even the persons who are, you may call them bad or shaitan or whatever you call them. Why the Israel is the darling of USA? We have to realize that. Why? Because the education leads to technology, and the technology leads to economic enrichment. And economic enrichment means empowerment. So why the Israel is the darling of USA and all the Western world? The population of Israel is just less than 1 crore. And Alhamdulillah, the population of the Muslims in the world is of 57 countries about 1 billion. And they've got plenty of money also. They've got petrodollars. They've got everything. But what? We definitely lag behind in technology. So what I mean to say that Sir Syed's mission has achieved something, but at a very limited level, maybe in the South Asia and somewhere. But it should have reached the other countries also. The Aligarh was not, Sir Syed has not done something only for the South Asians. His vision was very broad and the canvas was very vast. So if you think the
all these, whatever the Israel is doing, and the people, it has been ignored even by the United Nations, which they are passing the strictures against Israel and other countries, also the Western powers, and nothing is being done. Why? If Palestinians had technology, they have their own army, they have their own, they have industries. Do you think they could have dared to do this? No, not at all. नहीं कर सकते थे, कभी नहीं. And why nobody is supporting them? Why? I'm saying अमेरिका के क्यों वो चहीते हो रहे हैं, क्यों आंख कटा रहा है उनके? Because they have controlled the whole economy of US. तो इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए जो शुड हैव एजुकेशन, एजुकेशन के लिए के साथ आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी से आपके पास इकोनॉमिक पावर आएगा, इकोनॉमिक पावर से एम्पावरमेंट आता है. आप कंट्रोल कर सकते हैं, वेदर इट दे आर डेमोक्रेट्स और दे आर रिपब्लिकन्स, द अमेरिकन पॉलिसी नेवर चेंजेस. And unfortunately, nobody is helping, not even the Muslim countries. They are doing anything for the Gaza, and genocide is going on. So you have to correlate it with the education and technology. If we had education and technology anywhere in the Muslim world, whether they are the rich petrodollar sheikdoms or the other countries, they could have never done it, whatever is being done in Gaza at present, the genocide. तो इसको तो मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि ठीक है, हमारे अलीगेरियंस दुनिया में हर जगह हैं. They are working in the Gulf, and there are plenty of Algerians working in Gulf, and they've got holding a very good position, whether it's Saudi Arabia or UAE, anywhere. I think ये जो हमारा मिशन है सर सैयद का, इसको अलीगढ़ मूवमेंट को उसको थोड़ा सा वहां पर भी हम करना चाहिए था, हमको वहां भी कुछ काम करना चाहिए था, ताकि ये सिर्फ नहीं कि हमने एक स्कूल खोल लिया किसी गांव में, बल्कि नॉलेज को प्रोपेगेट करना चाहिए था, और वहां के लोगों में भी ये जज्बा आना चाहिए था कि वो भी टेक्नोलॉजी एक्वायर करें किसी तरीके से. हमारे साइंटिस्ट वहां मौजूद हैं, तो आज ये सीनरियो नहीं होता. डोंट थिंक दैट आई एम जस्ट इंडल्जिंग इन पॉलिटिक्स. दूसरी बात जो सर सैयद ने एक और जो कही है, यूनिटी फॉर मुस्लिम्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल यूनिटी फॉर मुस्लिम्स. डू यू थिंक वी आर यूनाइटेड? कैन एनीबडी से दैट we are still united? There are 57 countries, 57 Muslim countries, and what is happening in the world? So that का मतलब हुआ कि लेगेसी सर सैयद की यहाँ पर भी फेल हो गई. I'm sorry, we are responsible for that. We are Algerians. हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है, और ये चिराग पहले घर से जलता है. मैं अपना बुआ के ऑफिस बेरर से कहूंगा कि प्लीज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फोरम ऑफ अमूबा. आप पहले अपने लेवल से शुरू कीजिए. आप ये देखिए कि क्या हम लोगों में के जो हमारे मेंबर्स हैं, especially on 2 dates, on 12th of Rabiul Awwal and on 1st of Muharram, you see what sort of debate is going on our forums. So start uniting our people first, and then we should go and try to unite all the Muslims. Then we should carry forward the legacy of Sir Syed, which he has thought, which has dreamt of about 150 years back, जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था सैयद ने. तो 2 चीजों पे हमें खास तौर से काम करना है. एक तो एजुकेशन पे, अपने लेवल पे जो कर सकते हैं. कोई जरूरी नहीं कि हर शख्स पैसा दे सके या जमीन दे सके, उसके पास नहीं होगी, लेकिन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम इज मनी. अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वक्त तो दे सकते हैं कम से कम. जो स्कूल खुल रहे हैं हमारे, या आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वक्त के साथ कीजिए. जहां जो लोग स्कूल खोल रहे हैं उसमें जितना वक्त दे सकते हैं. अगर आप टीचिंग करने के काबिल तो पढ़ाइए जाकर के. नहीं पढ़ा सकते आप तो इन एनी फॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म, कुछ तो कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए आप किसी न किसी तरीके से. अपने लेवल से शुरू कीजिए. फॉर्म अ यूनिट, एंड देन यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द बिगर कैनवस. ये आप इस तरीके से कर सकते हैं. और दूसरी यूनिटी पे मैंने जो बात की, बातें बहुत तल्ख लगेंगी, आई एम श्योर. ये हो रही है, जो होती है हम देखते हैं, सुबह शाम ही हो रही है. और यही जब ये बड़े पैमाने पर होती है तो वो होता है जो आज इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है हमारे साथ, जहां हम सब देख रहे हैं, आंख बंद करके खड़े हुए हैं और फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. बिकॉज वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न्स. हम सिर्फ यूएस से में बना हुआ बोइंग खरीद करके $1 बिलियन में उन्हीं के प्रेसिडेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं बस. दैट्स ऑल. वी आर नॉट कैपेबल ऑफ बिल्डिंग इवन अ फाइटर प्लेन. तो ये सब करने के लिए टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की जरूरत है. तो स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशन देन टेक्नोलॉजी. हम इंडिया में कर रहे हैं, वेरी गुड, इंडिया इज डूइंग अ लॉट, बट अदर कंट्रीज आप उनको देखिए, जो हमारे और मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो टेक्नोलॉजी में कितना पीछे हैं. तो मैं अब अपने अलीगेरियन ब्रदर से एक दरखास्त खास तौर करूंगा, हर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट फ्रॉम AMU, open a chair in the name of a scientist, a chair for particular scientist like
किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे एक साइंटिफिक चेयर को आप स्पॉन्सर कीजिए, आप उसको फाइनेंस कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम एएमयू और फिर बाकी यूनिवर्सिटी में भी कीजिए। तो ऐसा जब साइंटिफिक जो आप इनोवेशंस होंगे उससे फायदा होगा और ये कम्युनिटी में हर तरफ फैलेगा, और ये यहाँ से निकल करके आपका जो चेयर है, इन्वेंशन है, ये हो सकता है गल्फ के कंट्रीज में और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में पहुंचे, उससे उनको भी फायदा हो। तो प्लीज try to carry forward the legacy of Sir Syed, especially in two fields, in education and unity among Muslims, and start from the house itself. अपने प्लेटफॉर्म से, अपने फोरम से शुरू कीजिए and show the world that we are united. There should be no difference of opinion on sectorial और मसलकी किसी किस्म का भी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, और उसको जाहिर मत कीजिए कम से कम प्लेटफॉर्म पे आकर के। AMU इज ए सेकुलर इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट ए दारुल उलूम। तो उस पर जो भी किस्म के डिस्कशन चलते हैं वो उस बात का ख्याल रखना चाहिए। उस पर मैं देखा करता हूँ अक्सर लोगों को इस तरह की बातें ना हो कि दूसरों को लगे। माथुर साहब भी हमारे बैठे हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इतने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे सीनियर अलीग हैं, उनको पता है। हम हर साल सर सैयद में ये बता के निकल जाते हैं कि हमारा पहला ग्रेजुएट जो था अलीगढ़ का AMU का, वो ही वॉज हिंदू। ओके फाइन, एब्सोल्युटली। लेकिन उसके बाद हमने किस हद तक इस यूनिटी को कायम रखा? सर सैयद सिर्फ अमंग मुस्लिम्स यूनिटी की बात नहीं करते थे, अमंग डिफरेंट रिलीजन्स ऑल्सो करते थे वो। तो इसी मिशन को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो जो हमारे जो इस्लामोफोबिया है हर तरफ, वो भी कम होगा, आपकी वक़्त भी होगी, आपके लोगों की इज्जत भी होगी, एंड एम्पावरमेंट भी होगा, एनरिचमेंट भी होगा। यू विल बी इकोनॉमिकली वेरी पावरफुल एंड indispensable, definitely. Thank you so much. Thank you, Professor. We appreciate your valuable thoughts. And we do agree that digital literacy and utilizing technology is so important today for growth. Just this morning, I got an Alum Connect form from Aligarh Muslim University, where there was a section where they asked me to give a feedback, and I literally wrote the same thing, that we should be digitally ahead in the game. And we agree with everything you said. Building on this thought-provoking session, it's my privilege to invite a highly respected alumnus of Aligarh Muslim University, Engineer Arun Kumar Mathur sir. Very senior Alig, as mentioned, a former Chief Engineer and Director General PPA with the UP State Electricity Board. He played a key role in shaping critical infrastructure and facilitating private sector investment in power projects across the entire Uttar Pradesh. And Mr. Mathur has authored multiple technical papers presented and at international forums, and he has held senior leadership roles in UPSEB, from superintendent engineer to executive director. And he has been an active force in AMUOBA Lucknow and the Lucknow Management Association for over 2 decades now, winning 9 national awards, serving as executive director and now vice president of LMA. His leadership helped elevate LMA from AMI A category 4 to category 1, a legacy that continues to shape management thought in India. So please join me in welcoming Engineer Arun Kumar Mathur sir, whose career truly reflects both professional excellence and a deep commitment to his alma mater. Over to you, sir. Can you hear me? Yes, we can hear you. It's both an honor and a moment of deep personal reflection to join you all for the Golden Jubilee celebrations of AMUOBA Lucknow. This organization, with which I have the honor of being associated for the last 3 decades, carries forward the vision and mission of our beloved alma mater, Aligarh Muslim University. सर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अपना वीडियो ऑन जी। ओके, आपको देखें तो हम लोग। अच्छा सॉरी। जी हो गया।
My association with AMU began in the year 1957 when I first walked through its historic gates. The university was in the midst of a remarkable transformation under the dynamic leadership of Vice Chancellor Colonel B.H. Zedi. Infrastructure was blooming in every corner. I remember vividly the construction of Grand Maulana Azad Library building, said then to be the largest in Asia. The medical college campus was coming up, and the majestic Faculty of Arts building, home to the Center of Advanced Studies in History under the visionary Professor Irfan Habib, was being established. To this day, at the age of 93, Professor Irfan Habib continues to guide the scholars across the country, a living testament on the enduring academic spirits of Aligarh. Over the years, the university has seen many peaks, but the tenure of General Zamiruddin Shah as the Vice Chancellor stands out distinctly. It was under his stewardship that AMU regained national prominence, ranking amongst the India's top university, of which we are all very proud, and with several departments recognized as centers of excellence. Sir, we salute your leadership. My association with Aligarh spanned 25 meaningful years, beginning with my time as a student and continuing through my wife's tenure as a faculty member. Our family lived in Aligarh, and two of my siblings also studied at the university. The values instilled by AMU continue to guide us to this day. I had the privilege of being taught and mentored by some of the finest minds of the country. I recall Professor A.R. Kidwai and Dr. Wahiduddin Malik in the chemistry department, Professor P.S. Gill and Professor Chaku in the engineering, and had also the good fortune of knowing Professor Irfan Habib and Dr. Nurul Hassan in history, who later went on to serve as the Union Minister of Education. Dr. Zahoor Qasim, an eminent marine biologist and one of the pioneers of India's Antarctic missions. Professor D.P. Mukherjee, the renowned economist, and of course, Dr. A.M. Khusro, the Vice Chancellor, all of whom made indelible contribution both to academia and public service. The list is endless, as you know. Engaging with such intellectual giants was more than an academic experience. It was shaping of values and deepening of my commitment to serve the society. A principle that lies at the very heart of Sir Syed Ahmad Khan's vision. Sir Syed was not merely an educationist, he was a social reformer, a visionary, and a builder of modern India. In the age of colonial oppression and deep social divisions, he laid the foundation of an institution that brought to empower the Indian Muslim communities, not through faith, but through modern science and rational inquiry and civic management. He advocated for women's education, interfaith dialogue, and critical thinking, values that remain as relevant today as they were in the 19th century. It is this spirit that AMUOBA strives to carry forward in its humble way, as Shoaib Bhai has just mentioned. Beyond being a platform for alumni engagement, our association has been contributing actively to the social development and cultural preservation. We work at the grassroots,
to raise educational awareness amongst the underprivileged. And we also organize regular programs on scientific management, public policy, and national development in collaboration with other professional bodies. This is our way of honoring Sir Syed's legacy, not just in words, but in action. Let us continue to uphold the legacy of Sir Syed Ahmad Khan with dignity, service, and excellence. Thank you all. Thank you, Mathur sir. It's an absolute pleasure to have you with us and hear your thoughts. It is now my honor to invite our chief guest for the evening, Lieutenant General Zamiruddin Shah Saab, PVSM, SM, VSM, a distinguished former Deputy Chief of Army Staff in the Indian Army. After an illustrious military career, he continued his service to the nation as an administrative member of the Armed Forces Tribunal and later as the Vice Chancellor of Aligarh Muslim University. A leader known for his discipline, vision, and lifelong dedication to public service. We are privileged to have you here with us today, sir. Please join me in warmly welcoming Lieutenant General Zamiruddin Shah Saab. Thank you. Assalamu alaikum and Jai Hind. It is indeed a great honor to be speaking to the alumni from Lucknow. My first suggestion is it is time for change. And instead of calling it Old Boys Association, call it Alumni Association, because the women are very much an integral part of the old alumni. So that's number one suggestion. What is Sir Syed's legacy? Sir Syed's legacy was modern scientific education and large-hearted tolerance. I'll come to that. Modern scientific education. We've got to view everything in a scientific manner, encourage the study of science, especially amongst our children. Unfortunately, mathematics is not a favorite subject amongst large number of Muslim family students. We have got to encourage scientific thought. I mean, Sir Syed raised the Scientific Education Society for a particular reason. That means we need to imbibe scientific thought in our actions and deeds. That is number one. Secondly, education. Of course, during the time of Sir Syed, an education, higher education was the requirement because we had no higher education amongst us. Banaras Hindu University had been made 2 years before AMU. So Sir Syed's mission was a university. We have got a university, and let me tell you, we've got several other universities with which I am associated with. We've got Mehboob ul Haq's Saab's University in Meghalaya. We've got our own university in Lucknow, Integral University, and this is what we need to do. But more important than universities is good modern schools. Unless we strengthen the education foundation of our children, they will be laggards. They will not be able to get admission into institutions of higher learning. There's no dearth of them. And admission to these institutions is by open competitive examination. Our children, because of poor schooling, cannot get admission in open competitive examinations. We have recently teamed up with Association of Muslim Professionals, and we have decided that we are going to attempt
to raise 500 modern schools across the country in every district. I know it is a daunting task. It may appear impossible, but let's make a start. Let's make a start in establishing one modern school in every district. I'm glad that the leagues of Lucknow are making this wonderful school, and this will be the breeding ground of young scientists, young professionals, young social workers, and I think that the Lucknow leagues have gone in the right direction. Their priorities are absolutely right. We need modern schools. I've always been saying, if you strengthen the foundation, you have achieved the aim. Because even if the building gets knocked down, if you have a firm foundation, it can be rebuilt. A large number of our buildings, a large number of our schools have gone to seed. There were schools in most districts of UP. Unfortunately, they have gone to seed. We need to rebuild right from the foundation, and the leagues of Lucknow are working in the right direction. A word about large-hearted tolerance. We are living in a country where we need to understand and not hurt the sentiments of the majority population. This is vital for us to understand. Please, there are 2 or 3 things which we need to instill in our young. One is calling another community by a derogatory name. Please refrain from that nonsense. Kafir and other nonsense which is talked about. There's no such thing. We are all Indians. Large-hearted tolerance is what Sir Syed taught us. And another thing, keep the sentiments of the majority population in mind. During Eid, there is no need to sacrifice animals in the sight of members of the majority community. For God's sake, do it privately, do it in a place where there's no publicity. This is important. Remember, we must speak our minds. I do, but I have been advising a large number of people, including my brother. We must give our minds clearly, but we must not use offensive language. That is something which works towards large-hearted tolerance. Ladies and gentlemen, you are privileged. I always say, to whom much is given, much is expected. Leagues have been given a large facility, they've got education. Now repay it back. To whom much is given and a lot has been given to you, give back to the country, give back to the community. We cannot have laggards. We cannot have uneducated people. We cannot have people who think in a narrow-minded fashion. Large-hearted tolerance is the need of the hour. This is our country. We have to be true to the salt we eat. So this is Sir Syed's legacy. And I've always been saying, when you speak little, speak sense. So I want to thank Shoaib Saab. I want to thank the moderator. I want to thank Mathur Saab for his words, which have instilled a lot of josh, a lot of confidence in me to carry out with our mission. Large-hearted tolerance and scientific bent of mind and education. This is the way forward for leagues and for the rest of the country. Thank you very much. I wish you good luck and congratulate all of you on the Golden Jubilee. Carry on with our work. We will be with you. God bless you all. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much.
Thank you, General Shah, sir, for sharing your insights and for gracing this occasion with your wisdom and presence. Points are duly noted. We are truly honored. As we draw this meaningful evening to a close now, it's time to express our heartfelt gratitude to all those who made it possible. To offer the concluding remarks and a formal word of thanks, I now invite Ms. Shaila Haq, Honorary Secretary of AMUOBA Lucknow, someone who has worked tirelessly behind the scenes to bring this celebration, this Golden Jubilee celebration to life. Shaila Appa, over to you. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected guests, esteemed speakers, and beloved allies. As we come to the close of this thoughtful, provoking, and inspiring webinar, my heart is filled with pride and gratitude. On behalf of AMU Alumni Association Lucknow, I extend my heartfelt thanks to all our distinguished panelists who grace this event with their valuable insights and reaffirm the timeless relevance of Sir Syed Ahmad Khan's vision. Today, we witness the living legacy of Sir Syed Ahmad Khan, sir, brilliantly reflected in each speaker's journey of service, innovation, and social impact. From education to healthcare, community building to global leadership, our alumni are not only honoring his ideals, they are carrying them forward with strength and sincerity. I'm thankful to my team members and especially Maham Abbasi and wonderful audience who joined us. May our association grow stronger with time and continue to serve the cause of Talim, Tarbiyat, and Taraqi, education, character building, and progress. Let me end with a couplet that truly reflects the spirit of AMU and the strength of our community. जो शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, जो शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो औकात में रहें. Thank you and have a nice day. माशाल्लाह, बहुत अच्छा शेर था आपका. बहुत अच्छा. माशाल्लाह. शुक्रिया सर, शुक्रिया. Thank you, Appa. Thank you everyone for joining. It was a very powerful session. I surely have a lot of points noted that I'm going to make sure that I take back to my community, to the people I work with. And thank you to AMUOBA Lucknow for giving me this opportunity and having all of these change makers together at one platform. It was really, truly amazing. भाई मेरे ख्याल में जमीरुद्दीन साहब को माहिम Yes, sir. आप जमीरुद्दीन साहब को ये खुशखबरी सुना दीजिए क्या कि अमूबा लखनऊ लीड ले ली है. हमारी जनरल सेक्रेटरी एक लेडी हैं, तो ये अलुमनाई एसोसिएशन हो गई. और वाइस प्रेसिडेंट भी रियाज भाई, वाइस प्रेसिडेंट भी. अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट तो हम लोग तो माइनॉरिटी में हैं. नहीं, तो इसीलिए तो कह रहे हैं शाह साहब के उसका नाम बदलिए. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. Lot is in a name. Yes, exactly. So we have to Alumni Association. सही है. तो आज ये रेजोल्यूशन मान लिया जाए सर? हाँ, रेजोल्यूशन माने बिल्कुल. We already have a general secretary and the vice president. इसलिए अलुमनाई एसोसिएशन हो गया है. देखिए, आज माहम ने भी बहुत कमाल किया है, माशाल्लाह. बहुत खुशी हुई और काफी दिन से लगी हुई थी इसमें, तो इनके लिए भी हम लोगों को ताली तो बजाना ही चाहिए. भाई अमूबा के फ्यूचर तो माहम जैसों के ही हाथ में है अब. एग्जैक्टली. बिल्कुल. हमारी रियाज भाई यही कोशिश है कि जो हमारा जो नौजवान तबका है उसको आगे बढ़ाएं. कब तक हम लोग जो है ये ढोते रहेंगे? ये लोग आए, अब संभालें ये. और आज माहम ने इसको साबित कर दिया कि हमारे पास वाकई बहुत हीरे मौजूद हैं. और इसमें मैं समझता हूँ कि माहम की वालदा की भी मैं बहुत तारीफ करूंगा कि जिनकी तरबियत इस तरह की उन्होंने दी है अपनी बेटी को. वो खुद भी अलीग हैं और हमने मॉडरेशन के लिए पहले उन्हीं से कहा था कि भाई आप माहम को इजाजत दीजिए, और उन्होंने बखुशी इस बात को कबूल किया. और न सिर्फ ये कि कबूल किया बल्कि आज आपने माहम के जौहर भी देख लिए. तो ये आज से हम अलुमनाई एसोसिएशन समझें इसको. हाँ, ये तो अनाउंस कर दीजिए शोएब साहब
नहीं, अब कि ये आज रजिस्टर यूथ आज को से अलुमनाई एसोसिएशन हो जाए। बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग में इस बार रखेंगे, हाँ, क्योंकि हाँ इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो ये हो अगर सकते हैं। शहला साहबा के दौर में ये नहीं हुआ तो कब होगा फिर? नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह। एलओआई तो लिख रहे हैं, एमयू में ब्रैकेट